Next is the variation of Helmholtz function, that is work function with temperature and volume. Now, according to the definition of work function, that A is equal to U minus TS, where A is the work function and it is also known as Helmholtz function. Now, complete differentiation of this equation gives this equation number second, means differentiation of this equation first, it gives the equation second. It is very important to understand the topic of differentiation for those students who didn't know about it. सो इसकी जो डिफरेंशिएशन करनी है, लैफ्ट हैंड साइड से तो एक वेरिएबल है a, तो dA आ जाएगा, राइट हैंड साइड ते u du, ए वाला जो सेकंड फैक्टर है राइट हैंड साइड का, ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਆ, ਇੰਟਰੋਪੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋਪੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ टाइम ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इंट्रोपी ਨੂੰ कांस्टेंट रखांगे, टेंपरेचर का डेरिवेटिव करांगे। Now according to definition of entropy, the small change in entropy is equal to small amount of heat absorbed or exchanged or lost at particular temperature. So ds is equal to q reversible upon t, and according to first law of thermodynamics, q reversible is equal to du minus small amount of work. This all is for small change, this is also for small change. Now if we are considering the work of expansion, if work of expansion, then minus work is equal to P into dV. Put this value of work of expansion into this equation 4. Now equation 4 becomes small amount of heat is equal to du plus P into dV. Suppose it is equation number 6. Now put this value of reversible amount of heat absorbed from equation 6 into this equation 3rd. So ds is equal to du plus pdv upon temperature, the small entropy change. Now cross multiply this, T into small amount of entropy change is equal to du plus pdv. Now put this value of T ds, that is equal to du plus pdv from equation 7 into this equation, equation number second, means simply put the value of T ds from equation 7. The equation second becomes da is equal to du as such लिख लिया, and TDS की जगह पे du plus PDV पुट करता, माइनस SDT as such रहा। सो इथे du दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन आऊगा dA is equal to minus PDV minus S into dt. Now we are taking the condition that if temperature is kept constant, then dt is equal to 0. dt मतलब change in temperature, मतलब अगर initial temperature ते final temperature दी value same होगी, तो जब आप दोनों ने minus करेंगे तो 0 आ जाएगा। So dt दी value 0 put कर दो equation 8 तक ही आऊगा da at a constant temperature is equal to minus p into dv at constant temperature. So इथों अगर आप derivative वाली terms एक side ले लिए, da और dv इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dA upon dt at a constant temperature is equal to minus pressure. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ from equation number 8, जिवें आपां टेंपरेचर नु कांस्टेंट रखिया, if sorry इथा वॉल्यूम नु कांस्टेंट रखांगे, if volume is kept constant, then की होगा, this small change in volume is equal to 0. इथे देखो दो ही डेरिवेटिव वाले टर्म्स ने, एक dt है एक dv है। इथे आपां dt दी वैल्यू 0 बना ली जदों टेंपरेचर कांस्टेंट है, हुण आपां dv दी वैल्यू 0 बना ली जदों प्रेशर की है कांस्टेंट। सो इस दे विच जदों पुट करांगे तां की आऊगा, dA
at constant volume is equal to minus s into dt at constant volume. So expression आऊगा curly a upon curly t at constant volume is equal to minus of entropy. So ये दो equation number 9 and this equation number 10, these gives us the variation of work function with the temperature and with volume. Now ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਰਜ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ this two equation gives us the change in Gibbs function with respect to temperature and with respect to volume. Now this is for the small change. For a finite process ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, change in work function under isothermal conditions. For finite process ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ small change ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ integrate ਕਰਨਾ। this equation 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, integrate equation 9, then change in work function delta A is equal to ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ dA small change है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ integrate करता है कि बन गया large change delta A is equal to right hand side पे minus किया pressure into dV, pressure into dV ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, integrate करना, इंटीग्रेशन लिमिट्स लवांगे। अगर अपना वॉल्यूम चेंज हो रहा V1 तो लैके V2 तक, इत्थे पहला इनू भी चाहे तुसी इंटीग्रेट लिख लो, इनू इंटीग्रेट करेंगे ਆਪਾਂ A1 तो लैके A2 तक, तो इनू जो सॉल्व करेंगे इत्थे A बनूगा। राइट हैंड साइड दे विच की है माइनस P इंटू dV V1 to V2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ A2 minus A1 that is equal to delta A is equal to integrate from limits V1 to V2. This is the how we calculate the change in work function for any finite process for isothermal conditions. Isothermal conditions ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ temperature constant ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ideal gas equation ਦੇ according PV is equal to RT for 1 mole, from here pressure is equal to RT upon volume. Suppose it is equation number 11. So put the value of this pressure into this equation 11. Delta A is equal to minus integration from V1 to V2 RT upon volume into dV. So ਹੁਣ integration करनी ਆਪਾਂ with respect to volume। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 upon x into dx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, log x। After integrating delta A at a constant temperature is equal to minus RT बाहर ले लो because ਆਪਾਂ इंटीग्रेशन करते हैं with respect to volume, तो बाकी दोनों की ने constant minus R into temperature। इन्हों इंटीग्रेशन करने तो बाद आंदा log V। इंटीग्रेशन लिमिट्स ने V1 तो V2, तो इन्हों जो सॉल्व करेंगे log V2 minus log V1, ते log दा फॉर्मूला हुंदा log x minus y da log x upon log y. So this is the formula for
1 mole. And for n moles of ideal gas, the formula will be delta A at a constant temperature is equal to minus nRT log V2 upon V1. And अगर आप माइनस का साइन इस साइड ले जाइए फिर क्या होगा, इधर आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू nRT log V2 upon V1, and this is work maximum. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। हाँ तो जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग किया वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसैस, तो उत्थे वर्क जिहड़ा हुंदा वो अपना मैक्सिमम वर्क हुंदा, उहदा फॉर्मूला आया सी माइनस nRT log V2 upon V1। तो ये वाला आपां कीता सीगा वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसैस। सो ये जिहड़ा माइनस nRT log V2 upon V1 ये अपनी इक्वेशन दे विच इहदी वैल्यू की आजू वर्क मैक्सिमम। तो इत्थों आपां डेरिवेशन तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेल्टा A is equal to minus of work maximum. So this is the complete derivation for Helmholtz function। पहला आपां दी वेरिएशन कीती विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, फिर वॉल्यूम कीती, बट आपां जिहड़ा फाइनाइट प्रोसैस दे लई कीता कैलकुलेट, ये आपां सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसैस दे लई कीता। तो आइसोथर्मल प्रोसैस दे लई आऊगा डेल्टा A at constant temperature is equal to minus nRT log V2 upon V1। According to this, delta A at a constant temperature is equal to minus of work maximum, sorry minus work maximum ही होगा दोस्तों, इत्थे माइनस का साइन है ते किदे कोल हुंदा वर्क मैक्सिमम दे, नहीं इत्थे रजे प्लस हुंदा, सॉरी गलत लिखता सीगा, इत्थे प्लस का साइन ही हुंदा, तो ओवरऑल इत्थे साइन की आऊगा माइनस का साइन आऊगा। Next is variation of Gibbs function, which is also known as Gibbs free energy with the temperature and pressure. So Gibbs free energy is represented by capital G, as I already tells you. So G is equal to H minus Ts. Suppose it is equation number first, and according to enthalpy's definition, H is equal to U plus PV. Now put this value of H from equation second into equation first. After putting the value of H, G becomes G is equal to U plus PV minus Ts. Now complete differentiation of this equation third, it gives the dg is equal to du, इथे दो वेरिएबल्स ने p into dv plus volume into dp, माइनस अगेन इथे दो वेरिएबल्स ने t into ds minus s into dt. Suppose it is equation number 4, and this is the entropy's formula. From here ds is equal to du plus pdv according to first law of thermodynamics if work is considered as a work of expansion. Now from here tds is equal to du plus pdv. Put this value of tds from equation 5th into this equation 4th. After putting this value, dg is equal to du plus pdv plus vdp minus tds की जगह पे पुट करता du plus pdv minus sdt. Now इत्थे du कैंसल आउट हो जाएंगे, pdv कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन आऊगा dg is equal to vdp minus s into dt. So this is the complete differentiation equation because ये अपन दस दिया the change in Gibbs free energy दो वेरिएबल से डिपेंड कर दिया, चेंज इन प्रेशर ते चेंज इन टेंपरेचर ते। अगेन आपां इत्थे देख सकते हैं राइट हैंड साइड ते दो ही वेरिएबल्स ने, एक तो प्रेशर है एक टेंपरेचर है जिन्हां दे विच चेंज हो रहा। सो एक बार आपां टेंपरेचर नु कांस्टेंट रखांगे, एक बार आपां प्रेशर नु कांस्टेंट रखांगे। इफ वी आर कंसीडरिंग द टेंपरेचर इज कांस्टेंट
then the change in temperature is equal to 0. Put the value of dt is equal to 0 into this equation 6. So dg is equal to v into dp at a constant temperature, here also at a constant temperature. So the partial differentiation of g with respect to temperature with respect to pressure आ गया थे at a constant temperature is equal to volume. Partial ਤਾਂ लेता because एक ਆਪਾਂ constant रख लिया, एक दूसरे वेरिएबल से with respect to ही ਆਪਾਂ differentiation कर रहे हैं. Again ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ pressure ਨੂੰ constant ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ change in pressure ਦੀ value 0 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ 6th equation ਦੇ ਵਿੱਚ put ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dg is equal to s dt ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ because ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0. So partial differentiation of gives free energy with respect to temperature is equal to minus of entropy. सो ये दोनों इक्वेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेंपरेचर. नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ स्मॉल चेंज ਦੇ ਲਈ. अगेन अगर ਆਪਾਂ फाइनाइट चेंज ਦੇ ਲਈ करना ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो राइट डाउन द चेंज इन free energy for complete process under isothermal conditions can be calculated as. for infinitesimal change किया, for infinitesimal change किया dg at a constant temperature is equal to v into small change in pressure. This is for infinitesimal change, मतलब बहुत थोड़े change के लिए है ना. अगर आपका करना for a finite change या फिर complete process के लिए जो pressure change होगा P1 to P2, then integrate, suppose it is equation number, this is already equation number 7, so integrate equation 7. After integration, integrate within the limits g1 to g2 constant temperature is equal to volume into dp p1 to p2. So right hand side, left hand side which delta G बन जाएगा at a constant temperature. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pressure according to ideal gas equation PV is equal to nRT. So from here volume is equal to nRT upon pressure. Put the value of this volume into this equation. Suppose it is equation number 8. So put the value of volume into this equation 8. After putting this value, the expression becomes nRT upon pressure, small change in pressure P1 to P2. So delta G at a constant temperature is equal to, इत्थे उनकी है nRT अपा constant ला लेने outside the bracket. सो इन्हों सॉल्व करने तो बाद की होगा, इधर विच भी सेम है 1 upon pressure into dp, लिमिट्स भी की ने प्रेशर दिया, तो इन्हों सॉल्व करने तो बाद सेम की बन जाएगा जिवें प्रीवियस केस दे विच बनया सी log p2 upon p1. So delta G at a constant temperature is equal to nRT log of p2 upon p1. ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ P1 V1 P2 V2. ਤਾਂ ਇੱਥੇ P2 upon P1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V1 upon V2. ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, this is for isothermal process. तो यही इक्वेशन दिया दो फॉर्म्स हो सकती हैं, nRT log P2 upon P1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V1 upon V2. ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ.
try all these miracles, and if you are facing any type of problem, kindly ask me. That's it for the day, students.